and the discussion topic is invitation for wedding. So please start. First we have to tell him that we have to discuss in Hindi. Your speaker is not clear, dear. Your speaker is words are not clear. That's why I can't understand. First in Hindi, then first in Hindi, then only English. Okay, ma'am. Hi, नमस्ते. कैसे हो करण? या मैं बहुत अच्छा हूँ. आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास. मैं यार काम से आई थी कि कल मेरी बहन की शादी है, तो आपको जरूर आना. कल आपकी बहन की शादी है? आपकी तो बहन ही नहीं है. Karan. या What are you doing, Karan? सॉरी. यार मैं जरूर आऊंगा. और मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि कल आपकी बहन की शादी है. बहुत दिन बाद मौका मिलता है, क्योंकि बहुत दिन से घर में कुछ शादियां नहीं आ रही है ना. तो आपको अपने पूरे परिवार के साथ आना है, क्योंकि आप पिछली बार सिर्फ आप और आपकी वाइफ आई थी. ठीक है. आपको अपने माँ बाप को भी लाना पड़ेगा. पूरा परिवार आएगा आपका कल. तुम मुझे बता रहे हो कि धमकी दे रहे हो? मैसेज दूंगी. अच्छा ठीक है. या मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा. होल फैमिली, खानदान में जितने भी सबको ले आऊंगा. ठीक है. और मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी बहन की शादी आ चुकी है. और मैं जरूर आऊंगा अपनी फैमिली के साथ. और मैं दुआ देता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी की रस्में और शादी अच्छे से जाए. हाँ, और आपको बहुत समय से पहले ही आना है. मतलब आप कल 5 बजे पहुँच जाना. आप 5 बजे पहुँच जाना. शाम को 5 बजे? शाम को 5 जरूर बजे पहुँच जाऊंगा. बिल्कुल समय पे पहुँच जाना. और खाना होगा 7 बजे. मैं शाम को 5 बजे ही पहुँच जाऊंगा. और मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ खूब एंजॉय करूंगा आपकी पार्टी में आकर. वैसे भी आप तुम्हारे रिलेटिव्स आपकी पार्टी तो हम कभी भूल ही नहीं सकते. आपकी शादी में ना आना. मैं जरूर आऊंगा. धन्यवाद. You have to say some details, that where she is living, what are the points, many things, many questions you have to create. आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस खुद से तैयार करना होगा. ठीक है? Can I invite her? Yeah, you invite her. Yeah, let me see. Okay. Hey, hello. अरे आप कैसे हैं? अरे हम तो बिल्कुल ठीक है. और आप बताइए, आप कैसे? और किस मकसद से आना हुआ आपका यहाँ? हम भी पूरे तरीके से स्वस्थ हैं. बस मेरा आने का यही मकसद था कि कल मेरे अंकल की शादी है और आपको जरूर आना है आपके सारे फैमिली मेंबर्स के साथ. अंकल की शादी है कल, तो हमें कितने बजे पहुँचना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? तो हमें कितने बजे पहुँचना पड़ेगा फिर कल? क्योंकि हमें कहीं जाना भी था. कल आपको 6:30 बजे पहुँच जाना है. और खाना 7:30 बजे शुरू हो जाएगा. 6:30 बजे? अच्छा, हम पहुँच जाएंगे. और शादी की रस्में 6:30 बजे शुरू हो जाएंगी. आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर आना है. और लड़की कहाँ की है? क्या बोल रहे? लड़की कहाँ की है? अंकल की शादी है, आंटी के लिए. आंटी लड़की कहाँ की है?
वेस्ट इंडीज की है। कुछ जॉब वॉब करती है? हाँ, लड़की की सरकारी जॉब है, ये तो रिश्ता लिया है। एक्चुअली तो सब कुछ अच्छे से हो गया फिर? हमें सब कुछ अच्छे से हो गया फिर? सबने दोनों ने पसंद कर लिया इस चीज़ को? रिश्ता भी पक्का हो गया और सब कुछ, जितने भी रस्में हो रही है सब कुछ अच्छे से जा रही है भगवान की भलाई से। और लड़की को कोई वो तो नहीं था एतराज कि नहीं करनी शादी, या सब कुछ अच्छे से निपट गया, मतलब अच्छे से? अच्छी लड़की है वैसे? ऐतराज तो था पर पैसा सब कुछ उगलवा देता है ना। लड़की को तो कोई ऐतराज नहीं था पर लड़के को ऐतराज था। लड़की को? पैसा मिल रहा तो- अंकल को आपके? हाँ। क्या कह रहे थे? ऐसे कह रहे थे कि मैं फॉरेन की लड़कियों से शादी नहीं कर सकता, मैं इंडिया से शादी करूंगा, मगर इंडियन के कोई ज्यादा रिश्ते नहीं आ रहे थे। हाँ, चलो वैसे सब अच्छे से हो गया ना, मतलब अच्छे से सारी रस्में हो गई ना? रस्में हो गई सारी आपकी, मतलब उनकी? सॉरी, क्या बोल रहे थे आप? रस्में हो गई सबकी, वो सब कुछ अच्छे से हो गया रस्में? हाँ, रस्में तो सब अच्छे से जा रही है। अगर आप आओ तो सब कुछ और अच्छे से होगा और आप एंजॉय भी करोगे वेडिंग को। हम जरूर आएंगे। हम Now speak in English. Now conversation, communicate in English. It is not necessary the same you have told. You have to convert. Hello, how are you? Yeah. Hey, hello, how are you, Shika? Yeah, hello. I am fine, and how are you? I am always be happy and healthy. And why did you? And yeah, after some time, after a long time, you came here. Yeah, we meet after a long time. Yeah. It's been a long time to meet with us. Any purpose you have to like? Yeah, there is a very important purpose. Because tomorrow is my What is it? Because tomorrow is my uncle's wedding and you definitely came with your family members. Wow. Okay, you are really. If you do not came, I become very sad. No. Tomorrow I will spend with my whole family, and we will surely came. Like neither we have to go tomorrow, like we have to go somewhere, but we will cancel our program and we will came at your uncle's wedding. So what is the timing when you going to outside? Like we will reach at our home like 8 p.m. Do you have only 20 to 30 minutes time to attend the wedding? No. Because the timing of the wedding is 6:30 to 6:30. Like no, we will cancel our program and definitely we will came at your we will come at your uncle's wedding. Very thank you. Very thank you. I am very thankful for you. No, Because I you am are very attending thankful our to you. wedding. Like you invite us. Okay. Hey, hello Harshit, how are you? Fine, Amit. And you? Please come here. I am also fine. And how is your family? My family is also fit and fine. And you? And yours family? Also fine. I have come. I think I know. Is there any special matter? That's why you came here. Yes. Actually, I have come there for a purpose. Tomorrow is my brother's wedding. So I come here for give the invitation
is a very nice thing, and many congratulations for your brothers from me and my family. Okay, thank you. Where is the arrangement? Arrangement is the wedding place is Hotel Delight near Bata Flyover. Okay, and where they live? There. Where they live? Girl side. Okay. My sister-in-law is from Gurgaon, and she's a teacher in a private school, and her mother is a housewife, and two daughters, both are working in IT sector. Which subject she studied? She's teaching English. Nice. English is a Yeah. English teachers are also very intelligent. Yes. And all our friends are coming, and also my relatives are coming tomorrow. Okay. Yes. And is this love marriage or arranged marriage? No, this is arranged marriage. This is arranged marriage. Okay. Yes. But I think you are late. Tomorrow is wedding and you came only before one day. I think you forgot. No, actually, I have no time. I have no time from jobs. Very busy schedule. So now I am free. Then I give the invitation. I am just laughing. Please don't. Yes. And don't be panic. Okay. So you are my best friend. Please accept my invitation, and you must come, and we will very enjoy. Okay. Surely I will come with my whole family and I will come before 8 p.m. Tomorrow I will live all full I will come. there. I And will I will come. enjoy. Okay? I will come. I will come. And Yes. I will enjoy her brother wedding. Okay. Thanks. Thank you, Amit. And bye, Amit. This is the way. That means you have to create some questions. You have to create some questions and another person will answer that question. Answer that one. You have to ask some questions and another person will. That means you have to produce questions. That means simply जब हमारे घर कोई आता है तो हम क्या करते हैं? आइए बैठिए, कहाँ कैसे आना हुआ, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, आप बोलिए आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, फिर आप शुरू करते हैं तो अच्छा कैसे आना हुआ. So like that means you should not think that it is a session is going on and you have to talk or you have to communicate. You should feel free. You should be natural in the time of communication. Then only you will be you will catch the fluency of this language. That's really very easy. Okay.